हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल ईओ एकेडमी। इस एकेडमी में हम आपको पढ़ाएंगे साइंस, मैथमेटिक्स डेली 1 घंटा। बेसिक से लेकर जो स्टूडेंट एमपीएससी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की एग्जाम कर रहे हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, बेसिक से सब कुछ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्व करके ले रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और डेली 1 घंटा हमारे साथ स्टडी कीजिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडाइसेस, चैप्टर इंडाइसेस, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे घातांक। इसके कुछ रूल्स है, कुछ फॉर्मूले हैं, वो अपन देखेंगे। इसका इंडाइसेस और घातांक, इसका मतलब क्या है। हमने अभी तक 2 स्क्वायर ये हमें मालूम है, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, ये सब दैट इज द स्क्वायर, क्यूब, रेज टू द पावर 4। तो सपोज ए रेज टू द पावर m एक क्वांटिटी है, ए को हम बेस बोलेंगे और m को इंडेक्स और इंडाइसेस, इसको पावर भी बोला जाता है। तो जब बात करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ए रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m। इंडाइसेस मतलब बेस का खुद का मल्टीप्लीकेशन, जितना पावर है उतने टाइम तक। 2 स्क्वायर हम क्या बोलते हैं, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2। 2 इज द बेस, 2 इज द पावर। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, 2 रेज टू द पावर 2, बेस का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स सपोज 6 रेज टू द पावर 3, यहां पर बेस 6 है और पावर कितना है 3, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन खुद का उसके साथ कितने टाइम तक, 3 टाइम तक। 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 टाइम्स। इसको हम घातांक बोलेंगे। तो इसके कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है। फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ इंडाइसेस। फर्स्ट, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। बेस a है, पावर अलग अलग है। एट दैट टाइम यहां पर जब मल्टीप्लीकेशन होगा दोनों का, तो a रेज टू द पावर m प्लस n, पावर का एडिशन हो जाएगा। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 1, दैट इज 3 रेज टू द पावर 3। मतलब बेस 3 पावर 3, तो बेस का मल्टीप्लीकेशन खुद के साथ कितने बार तक, जितना पावर है, 3 बार पावर है यहां पर, इसलिए हम 3 इंटू 3 इंटू 3 डू द मल्टीप्लीकेशन। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। This is the answer. Second law है a raised to the power m raised to the power n, ब्रैकेट में है, तो at that time a raised to the power m into
n a raised to the power mn. Example, 2 raised to the power 3 raised to the power 2. बेस 2 है, उसका पावर 3 है और ब्रैकेट का पावर 2 है. Then what will happen? 2 raised to the power 3 into 2, it becomes 2 raised to the power 6. Here base is a 6, power base is a 2, power is a 6. Therefore multiplication of base itself कितने बार तक? पावर जितना है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5, and last is the 6. What will be the answer? 64. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64. This is the second law or rule. Third one is, here two quantities are there, a into b raised to the power m. Then it becomes a raised to the power m into b raised to the power m. Example, 3 into 2 raised to the power 2, 3 square into 2 square, 9 into 4, answer is 36. Third law, third completed. Fourth law, a by b raised to the power m, one and the same. A raised to the power m, b raised to the power m. Just separate. न्यूमरेटर का न्यूमरेटर को दे दीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर को दे दीजिए. Then here b is not equal to 0. यहाँ b 0 नहीं होना चाहिए. Example, 2 divided by 3 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 divided by 3 raised to the power 2, 4 by 9, 2 to the 4, 3 3 is 9. This is the answer of this question. Fifth law, a raised to the power m divided by a raised to the power n. Base is the same. At that time a raised to the power m minus n. यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा. एग्जाम्पल देखेंगे इसका. 2 raised to the power 2 divided by 5, 3. What will happen? Base 2, 2 raised to the power 5 minus 3, 2 raised to the power 2, that is 4. Now a raised to the power 0 is equal to 1. Any quantity raised to the power 0 is equal to 1. Here any quantity is not equal to 0. लेकिन वो 0 नहीं होनी चाहिए. बाकी अब कौन सा भी नंबर ले लो, माइनस प्लस कोई भी नंबर आएगा, रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1. इसका एग्जांपल, कोई भी नंबर
5 raised to the power 0 is equal to 1, 10 raised to the power 0 is equal to 1, that it indicates that's degree. 0 is equal to 1. Any quantity raised to the power 0 is always 1. Now, next property, 1 upon a raised to the power m is equal to a raised to the power minus m, or a raised to the power m is equal to 1 upon a raised to the power minus m. डिवाइड में अगर है तो अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, एग्जांपल देखेंगे। 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3, अगर इसका निकालना है सॉल्यूशन 2 रेज़ टू द पावर माइनस 3, एंड सपोज इसका एग्जांपल 2 रेज़ टू द पावर 3 is equal to 1 upon 2 raised to the power minus 3. In this way, we can solve the problems. This is the law 7. Minus m raised to the power 2 is equal to positive. मतलब यहां पर अगर पावर में इफ पावर इज इवन देन आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर क्योंकि माइनस into minus it becomes plus. In multiplication minus into minus plus हो जाएगा। नाइन नंबर, minus m raised to the power or always negative. 10 number, under root of m is nothing but m raised to the power 1 by 2. इसको हाफ बोला जाता है। सपोज अगेन थर्ड रूट ऑफ m, इसको क्या बोलेंगे अपन, m raised to the power 1 by 3. फोर्थ रूट ऑफ m, इसको क्या बोलेंगे, m raised to the power 1 by 4. nth root of a raised to the power n is nothing but a raised to the power 1 by n raised to the power n. ये क्या होगा, n by n, n get cancelled here, a raised to the power 1 मतलब a. 12 number, nth root of a into nth root of b, then a into b, इसका क्या होगा, nth रूट होगा nth root of a into b. 13 number, nth root of a raised to the power m is nothing but nth root of a raised to the power m.
Again, what do you mean by nth root? That is a raised to the power m by n. 14th number, nth root of a divided by nth root of b is nothing but nth root of a divided by b. Solve. One number, 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 2. We want to solve this problem. क्या होगा? अपने पास एक प्रॉपर्टी है. Here we are using a raised to the power m into a raised to the power n is nothing but a raised to the power m plus n. तो यहाँ पर हम 2 is the base a और m यहाँ पर 3 है. 2 is the base here a, n यहाँ पर 2 है. It comes 2 raised to the power 3 plus 2 is equal to 2 raised to the power 5. कितना आएगा? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 1, 2, 3, 4, 5. 32 is the answer. मैं जब क्वेश्चन देता हूं तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए. ट्राई टू सॉल्व योर ओन. नहीं आता है तो वीडियो चला के देखिए. 3 raised to the power 13 divided by 3 raised to the power 8. Try to solve your own. वीडियो पॉज करके. नहीं आता है तो आप आंसर देख सकते हैं. यू आर यूजिंग प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी अपने पास? a raised to the power m divided by a raised to the power n is nothing but a raised to the power m divided by a raised to the power n. It becomes a raised to the power m minus n. Base 3 power 13 base 3 power 8. क्या सोल्यूशन आएगा? 3 raised to the power 13 divided by 3 raised to the power 8. 3 raised to the power 13 minus 8. Okay, 3 raised to the power 5. Base is 3, power is 5. बेस का मल्टीप्लिकेशन खुद का खुद के साथ. कब तक? जितना पावर है उतने तक. 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 1, 2, 3, 4, 5. Now calculate. The problem number 2. Now problem number 3. 4 square into 4 square into 3 cube. 3 square. Now अपने पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर. कौन सी प्रॉपर्टी है? a raised to the power m into b raised to the power m. Power is same. At that time a into b raised to the power m. You can use this property. A 4 into 3 raised to the power 2. 4 3s are 12. That is the 144. X cube into x raised to the power 4. Same. A raised to the power m into a raised to the power n. M plus n. X raised to the power 3 plus 4 is nothing but x raised to the power 7. Now next problem. 3 raised to the power
x into 3 raised to the power 2. You can easily solve this problem. Yeah, simply we are using the property a raised to the power m into a raised to the power n, a raised to the power m plus n, 3 raised to the power 2 plus x. Next problem. 5 raised to the power 2 raised to the power 3 divided by 5 raised to the power 2. रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यूज होगी। अपने पास एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू सॉल्व दिस 5 raised to the power 2 into 3. Here we are using a raised to the power m raised to the power n, a raised to the power m into n, that is, then divided by 5 raised to the power 2, 2 raised to the power 6 divided by 5 raised to the power 2. ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी a raised to the power m divided by a raised to the power n is nothing but a raised to the power m minus n, 5 raised to the power 6 minus 2. Then क्या होगा, 5 raised to the power 4, base is 5, power is 4, 5 का multiplication 4 times 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 625 is the answer. Two raised to the power 15 divided by 2 raised to the power 10, 12 into 2 raised to the power 2. अब यहाँ पर बोडोमॉस यूज होगा। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में कौन सा ऑपरेशन है ये पहले हमें देखना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में कौन सा है, डिवीजन है। यहाँ पर कौन सा रूल यूज होगा अपना, लॉग a raised to the power m divided by a raised to the power n, a raised to the power m minus n, ये रूल यहाँ पर यूज होगा। लॉग 2 raised to the power 15 minus 12, okay, divided by into 2 raised to the power 2, ब्रैकेट हट गया। then 15 minus 12, that is 3, 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 2। यहाँ पर दूसरा रूल यूज होगा, which one, a raised to the power m into a raised to the power n is nothing but a raised to the power m plus n, 2 raised to the power 3 plus 2, 2 raised to the power 5, base 2 power 5, दो का मल्टीप्लीकेशन जितना पावर है उतने तक 2 into 2 into 2 into 2 into 1 2 3 4 5, it is 32, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। आपको टेबल आना बहुत जरूरी है इसमें। यू शुड हैव लर्न द फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल इन फॉर द इंडाइसेस। आप इंडाइसेस बहुत अच्छे से कर पाओगे अगर टेबल आते हैं। अब हम देखेंगे कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। फाइंड विच इज स्मॉलर, हमें क्या ढूंढना है, स्मॉलर, दैट इज 5 स्क्वायर एंड 2 raised to the power 5। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो गिवन क्या है अपने पास, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब 5 into 5, that is 25,
2 रेज टू द पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32. Then 5 square is smaller than 2 raised to the power 5. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, विच इज ग्रेटर। मैं क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपको आता है पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। a रेज़ टू द पावर -10 इंटू a स्क्वायर इंटू a रेज़ टू द पावर -3। यहाँ पर 3 क्वांटिटी है बट बेस इज द सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑल क्वांटिटीज आर इन मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पर प्लस होता इफ, तो हम यहाँ पर रूल यूज नहीं कर सकते थे। इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन कौन सा है। इट इज मल्टीप्लिकेशन। वी आर यूजिंग द लॉ a raised to the power m into a raised to the power n into a raised to the power x. Suppose then what will happen? A raised to the power m plus n plus x. Directly a raised to the power -10 plus 2 -3 क्या होगा? a raised to the power 13 -13 plus 2 that is -11। काफी सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये -11 कहाँ से आया। उसके लिए -10 -3 it becomes -13 -13 plus 2 क्या होगा? सब्सट्रैक्शन। और बिगर का जो बड़ा रहेगा उसका साइन, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा? 11। यहाँ पर बड़ा कौन सा है? -13 बड़ा है, 13 का साइन कौन सा है? माइनस, देन इट इज माइनस। ये अगर कंफ्यूजन आता है आपको ये छोटे छोटे एडिशन सब्सट्रैक्शन का, तो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सिक्स ए क्यूब बी स्क्वेयर 6a cube b square multiplied by 2ab cube multiplied by 2a raised to the power 4 b raised to the power 4. This is the problem. What will happen? First of all, directly multiply of this 6 into 2 12, 12 into 2 24. Then a cube b square into ab cube into a raised to the power 4 b raised to the power 4. यहाँ पर अपना क्या रूल है? a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. Then a अलग निकालिए, to take a separate a raised to the power 3 प्लस यहाँ पर क्या होगा? कुछ नहीं है, मतलब 1 प्लस 4 इंटू बी रेज टू द पावर 2 प्लस 3 प्लस 4. Now 3 plus 1 5, 5 plus 3 that is 8, 24 a raised to the power 8 into 7 9
then 24 a raised to the power 8 b raised to the power 9. This is the answer. Third problem, x raised to the power 10 y cube divided by x square y raised to the power minus 2. Here a क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल a raised to the power m divided by a raised to the power n is nothing but a raised to the power m minus n. अगर 1 upon a raised to the power minus m is equal to a raised to the power m, ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी that we are using. Now x raised to the power 10 y cube divided by x square y raised to the power minus 2, x raised to the power 10 minus 2 into y raised to the power 3 plus 2. तो समझे, यहां पर इसको हम अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे सेपरेट तो आपको समझेगा. x रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी यूज हो गई. x रेज टू द पावर 10 माइनस 2. सेम y क्यूब डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर माइनस 2 y रेज टू द पावर 3 minus 2, minus becomes plus in multiplication, y raised to the power 3 plus 2. Now is it okay? Is equal to x raised to the power 8 into y raised to the power 5. This is the answer. Next problem, 15m raised to the power minus 4, 15m raised to the power minus 4 into n square raised to the power 3. क्या होगा? m a here we are using raised to the power n, क्या होगा? a raised to the power m into n. अगर a raised to the power m into b raised to the power n raised to the power x, a raised to the power m into x into b raised to the power n into x. Same 15 m raised to the power minus 15 रेज़ टू द पावर 3, कि यहाँ पर 15 को भी पावर है, पूरा ब्रैकेट को पावर 3 है, इसीलिए 15 को भी पावर देना बहुत ज़रूरी है. ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं बच्चे. m रेज़ टू द पावर minus 4 into 3 into n रेज़ टू द पावर 2 into 3. Now what is the cube of 15? Now what is the cube of 15? Square of 15 is 225 into 15 again. That is 3375 m raised to the power minus 1 into n raised to the power 6. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3375 n raised to the power 6 divided by m. This is the final answer.
Now 81 b square 81 b square raised to the power 1 by 2। अब क्या होगा? 1 by 2 मतलब क्या है? अंडर रूट। ठीक है, तो ये किसका होल स्क्वायर है ये हमें देखना पड़ेगा। इट इज द 9 into 9 is it nothing but 81। that is the whole square of 9। we can write here 9 square into b square raised to the power 1 by 2। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी अपनी? a into b। यहाँ पर प्रॉपर्टी थी रेज टू द पावर m 1 by n, then a raised to the power m by n into b raised to the power m by n। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। नाउ 9 raised to the power 2 by 2 into b raised to the power 2 by 2। 2 get cancelled, 2 get cancelled। this is the 9b is the आंसर। 2 get कैंसिल क्यों हुआ? 2 divided by 2 is equal to 2 1 is 2, 2 1 is 2, that is the 1। One 25 into x raised to the power 6 into y raised to the power minus 6 raised to the power 1 by 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये किसका होल क्यूब है? इट इज द 5 cube is nothing but 125 multiplication of 5 3 times 5 5 is 25 25 5 is 125 that is the 5 cube। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 raised to the power 3 into x raised to the power 6 into y raised to the power minus 6 raised to the power 1 by 3। यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज होगी अपनी। यहाँ पर यूज कौन सी करेंगे हम? a raised to the power m into b raised to the power n raised to the power 1 by x is nothing but a raised to the power m by x into b raised to the power n by x। क्या होगा? 5 raised to the power 3 by 3 x raised to the power 6 by 3 y raised to the power minus 6 by 3 3 get cancel 3 1s are 3 3 2s are 6 3 1s are 3 3 2s are 6। ये कैसा आएगा? 5x square y raised to the power minus 2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5x square divided by y square या फिर 5x by y raised to the power 2। Got it? Next problem। Fourth root of 16 a raised to the power 8 into b raised to the power minus 16 into c raised to the power 4 is equal to। इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? ये फोर्थ रूट है। अंडरस्टैंड? अपने पास एक प्रॉपर्टी है which one? nth root of a is nothing but a raised to the power 1 by n। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। फोर्थ रूट
16 a raised to the power 8 b raised to the power minus 16 c raised to the power 4 raised to the power 1 by 4। जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किया प्रॉब्लम उस फॉर्म में आ गया। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट ये किसका फोर्थ रूट है या नहीं है तो हमें वहां पर सॉल्यूशन निकालना है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 1/4 करके रख सकते हैं। नाउ 2 raised to the power 4 is nothing but 2 into 2 into 2 into 2 into 2. It is 16. 2 raised to the power 4 is nothing but 16. ओके, अब यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? सीधा सीधा a raised to the power m raised to the power 1 by n is nothing but a raised to the power 1 by m by n. 2 raised to the power 4 by 4, a raised to the power 8 by 4, b raised to the power minus 16 by 4, c raised to the power 4 by 4। ये 4 हमने अंदर सबको ले लिया। 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 4 16, that is the 4 4 1। 2 raised to the power 1 into a raised to the power 2 into b raised to the power minus 4 c raised to the power 1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 into a c a square c divided by b raised to the power 4। क्या है आखिर आंसर? Lastly 2a raised to the power 4c 2c 2 a raised to the power 2c divided by b raised to the power 4। This is the final answer। यहाँ पर हम रुक जाते हैं। 45 मिनट आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं, तो नेक्स्ट कल हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू। अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे ऑनलाइन आने के लिए, अपने डाउट पूछने के लिए जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करने हैं। थैंक यू सो मच।